कन्वर्सेशन फेज़ का जो पहला टॉपिक है फेस्टिवल्स, आज हम उस पर बात करेंगे और उसके जो क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, जिनको मैंने उर्दू में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, आज हम उनके इंग्लिश में आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी, उन्हें चाहिए कि वो पहले उन वीडियोस को देखें जिसमें मैंने तमाम के तमाम जो टॉपिक्स हैं, कन्वर्सेशन फेज़ के जो 6 टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है और उसमें क्वेश्चंस भी मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसमें गो के मैंने इंग्लिश में आंसर्स नहीं दिए, लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया। तो आपको अगर क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए तो फिर अब इस वीडियो में अब आप इंग्लिश में उनके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया कि जो कन्वर्सेशन फेज़ के 6 टॉपिक्स हैं ये आपके सामने। आज हम इसमें फेस्टिवल्स वाला करेंगे और फेस्टिवल्स का ये आपने पहले देखी है पिक्चर्स। कुछ फेस्टिवल्स मैंने चूज़ किए हुए हैं जो कि मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 3-4 रिलीजन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये ईद का है और क्रिसमस है, दिवाली है, हैलोवीन है। अब इसमें कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, कुछ नॉन रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो इसको सबसे पहले हम इनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। What are some of the most popular festivals or celebrations in your country? ये क्वेश्चन है। लेट्स से अगर आपको पूछा जाता है तो उसका आप आंसर देंगे कि there are many important festivals and celebrations in my country. For example, Eid, for example, Holi, Diwali, Christmas, Halloween, and that's it. Yeah. तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे के सारे फेस्टिवल्स का नाम लें, ज़ाहिर है कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ 3-4-5 आपको जहन में होने चाहिए। ठीक है, 2-3-4 जहन में होने चाहिए और वही बताएं, बाकी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आर दे सेलिब्रेटेड, तो आप कह सकते हैं कि दे आर सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट टाइम्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स हैव स्पेसिफिक डेट्स, बट देर आर सम फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन अप्रैल. There are some festivals which are celebrated in December, for example, Christmas, and some are celebrated in spring. ठीक है, are there religious festivals? Yes, some of them are religious festivals. For example, Eid, for example, Christmas or Diwali, but some are not religious. For example, Halloween, New Year. Is attending a mosque, temple, or a church on that day is part of the celebration? Yes, if it is a religious festival, yes, people go to mosques, temples and church to celebrate, to pray and then come back to celebrate. Yeah, but if it is not a religious festival, for example, Halloween or New Year, then nobody goes to these places of worship. Are there special foods connected with the celebrations? Yes, every festival has special food in my country. For example, at Eid people make different food, and at Christmas people have special food. At Diwali people have special food and they like it. Is gift giving part of these festivals? Yes, people give each other gifts, which is very good, and that also gives them a chance to express their feelings for other people. It shows their love, their care. Next question है, what are some of the things that are done at this festival or celebration? Let's say आपने कहा कि ईद है या दिवाली है या होली है या साकी है, कोई भी क्रिसमस, तो आप उसका बता सकते हैं। So for example, you can say there are some things special which are done at this festival. For example, early in the morning people go to mosque or church or temple and pray to God for their happiness, for their prosperity and health, and after that they come back home, they eat some food, and then they visit their friends where they have food again. Okay, do you enjoy these festivals? Yes, of course I enjoy these festivals. It's a great fun to be having great time with your friends and family. What activities normally take place at festivals?
तो आप इसमें तकरीबन वही बातें हैं, आप कह सकते हैं कि देयर आर मैनी एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल आफ्टर प्रेयर पीपल मेक फूड, they eat food together, then they sometimes do barbecues together. I mean 2 or 3 families they come, and then they make barbecues, or sometimes they go for a picnic as well. Okay, next question हो सकता है कि do you decorate your house for this celebration? Yes, we do decorate house. We clean the house and put some lighting and some colorful decorations. Are there special songs associated with the celebration? यानी celebration के साथ कोई इसमें कोई ख़ास किस्म के songs या गाने भी इसके साथ अटैच हैं? तो अगर तो हैं तो आप बताएं, अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि no, there are not any special songs attached to this celebration. अगर हैं तो आप कहें कि yes, because it's a religious festival, so there are certain songs that are attached to this festival or associated with this festival. Can you tell me about the wedding traditions in your country? अब ये शादियों की बात हो गई है. Wedding in my country is a very detailed opportunity or tradition. When I say detail, it means it lasts for 2 to 3 days and people celebrate everything. It's a very busy time. Describe the wedding you have been or heard about. किसी शादी पे अगर आप गए हैं तो उसका बताएं. तो फिर शादी की डिटेल तो हमारे कंट्रीज़ में इतनी है कि वो तो 20 मिनट लगेंगे. तो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि नॉर्मली पीपल decorate their houses, they put lighting, and then they sing songs. Yeah, they have wonderful clothes, colorful clothes, and then they have big feast. Now, so many people, like 200 or 300 people, come together and they eat at the same time in a place. And then after that, the bridegroom and maid, they are made to sit on the stage, and people take photographs. And yes, that's it. What gifts do guests usually give to the bride and groom? इसमें आप कह सकते हैं कि people, it depends on people. They can give any type of gifts, but mostly people give gifts which are useful items for their house, for their new life. Some people give money as well. Are there any traditional wedding dances or songs in your country? तो इसमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, भंगड़े और पता नहीं क्या क्या होता है. Yes, there are traditional wedding songs and dances in my country. For example, girls have different dances and songs, boys do different types of dances and songs. Do you celebrate New Year's Eve in your country? Yes, we do celebrate. There are some fireworks and people go out and eat out. How do you celebrate it? तो आप कह सकते हैं कि I normally go out with my friends or sometimes family to see the fireworks, and then we have food, and then sometimes we go to our friends' houses and enjoy. Do you enjoy going to festivals? Why not? तो आप कहेंगे कि yes, I enjoy going to festivals because it's really great to be having fun with friends and family, and also you see many people, you enjoy food and everything. Yeah, so ये कुछ हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चंस थे, जिसके आपको क्वेश्चंस तो पहले भी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, लेकिन आज हमने आपको बताया कि कैसे इनके आंसर्स इंग्लिश में दिए जा सकते हैं. बस ये आपने याद रखना है कि कोई भी चीज़ का कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है. ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं जो कि रीज़नेबल हो और कॉन्फिडेंस के साथ कहें, तो कुछ मसला नहीं होगा. कुछ लोग परेशान होते हैं टेस्ट का, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से पास होंगे. जस्ट प्रैक्टिस करें, वीडियोस देखें, बार बार क्वेश्चंस को लिख लें बेशक, और फिर प्रैक्टिस करें. फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय.